A very good morning, good afternoon, and good evening to all. So, this is Subhendu Das, your physics mentor. So, previously we have completed our Thermodynamics lecture 2 series, and today we will discuss thermodynamic work done in our lecture number 3. Okay, so let's start the topic. Previous जहाँ पढ़ा है I hope तुम सब भल से बुझीच. So, give your suggestion and put your comments in comment box. Okay, let's start. So now we will discuss thermodynamic work done. Okay, so our first case is case 1, when gas expands. Actually it would a biggest confusion समस्त मन रे physics और chemistry thermodynamics include अछि. So को केस रे वर्क डन पॉजिटिव, को केस रे वर्क डन नेगेटिव. फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अपोजिट अछि. सो देखो फिजिक्स टर केमती अछि अरेंज अछि. सो लेट्स लिसन. So when gas expands, bas. So this is our first case. So this is suppose a container having adiabatic wall on its two sides, and this is suppose our conducting wall. Okay, and let's draw the piston. This is our piston. Okay, so green color रे मुझे करूँ. This is our adiabatic wall. Adiabatic wall other name is non-conducting wall. This is our adiabatic wall. Okay, अच्छा. आउ piston area केते? Piston whole area is A. Yes. So when gas expands, so pressure केमते apply होगा? Gas is a fluid. So see pressure apply करछि देखो. This is the direction of pressure. So because of the expansion of gas, let this piston move through a small displacement dx. Piston तार original position to केते displace होला? Let it gets displaced to dx. Okay. So dx is the small displacement made by the piston because of the expansion of gas. So in language, what we have to write? Simply you write let piston moves through a distance dx due to thermodynamic process. Okay, and what is A? We have mentioned A, capital A. It is the area of cross section of piston. Yes. So because of small displacement dx, now we can calculate the small work done. So thus the small work done is dw is equal to work done formula we know, force vector dot displacement vector. एटा भलो जिनस एटी ऑब्जर्व करो. Fluid exerts force on the wall in perpendicular manner always. So this is the direction of force. देखो this is your direction of force. Yes, on the piston. And what is the displacement made by the piston? Again this is in upward direction. This is the displacement made by the piston. So force and displacement are in same direction. So we can say theta or angle between force and displacement is 0 degree. So we can write f vector dot ds vector, that is f dx cos 0. ए पार्टा भल से बुझो. Okay, because
this is the direction of force F vector, and same direction, that is your displacement vector. So angle between them is theta is 0 degree. So cos 0 is 1. So we can put dw is equal to f dx. Achha, we know pressure equal to force by area. So force will be equal to pressure into area. So this condition we can put. So instead of f, you write p into a into dx. Now you can say area into displacement or length, a into dx, that is the volume. Okay, that is your volume. So this is the change in volume actually. Area into that displacement, that is your change in volume, is this one. This is your change in volume. Clear? So instead of a dx, we can write p into dv. So a dx is equal to how much? That is your dv. So etu kon paile ame dw is equals to p dv. Thus dw is equal to p dv. So what is dw? Remember, dw is the work done by the system. Thus, and pdv एरा रिजल्ट हमर कोन आसला? पॉजिटिव वैल्यू आछि. माइनस pdv लेखिन ना, प्लस pdv लिखा है जी. सो पॉजिटिव. सो ऑलवेज यू रिमेंबर, एठी हम कोन कोले रे गैस टा एक्सपेंड होची, तारे वर्क डन बाय द सिस्टम. सो एक्सपेंशन ऑफ गैस मींस वर्क डन बाय द सिस्टम. ताले वर्क डन बाय द सिस्टम रे कोन हुए? वॉल्यूम इंक्रीज होची ना डिक्रीज होची? वॉल्यूम इंक्रीजेस. बस. सो एटू भलो कंक्लूजन मिलला. सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. work done by the system is positive. आज न्यूमेरिकल भी करवा भल से बुझ पार आराम से. देख, नेक्स्ट इज आवर केस 2. केस 2 ऑब्जर्व कर. ओके, जदि वॉइस स्लो हो तुमको ताल तुम 1.5x भी आराम से देख पार, ठीक लगे. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर केस 1 व्हेन गैस एक्सपेंड्स. नेक्स्ट केस इज आवर व्हेन गैस कॉन्ट्रैक्ट्स. नोट्स लिखार अच्छी टी स्लो कर दूसरी, स्क्रीनशॉट नहीं जापर. फास्ट आसला केस 1, टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन द डेरिवेशन पार्ट. यस, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, फिनिश्ड. नेक्स्ट इज आवर केस नंबर 2. कम टू केस 2. सो केस 2 इज व्हेन the gas contracts. Okay, this is our case number 2. तो सेमती आम करवा से सेम चैम्बर कथा आम देखा. जस्ट सी, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम. yes, so let, अच्छा piston ड्रॉ करवा. this is suppose the piston, this is our piston. okay, and capital A is the, as per our assumption, capital A is the area cross section of piston. yes, okay. बर्तमान कौन हम व्हेन गैस कॉन्ट्रैक्ट्स. गैस केमती कॉन्ट्रैक्ट करिया माने पिस्टन टाको तळु को आनिबा. ए भितर कोन अछि एठी बर्तमान देखो, ये भितर आमर अच्छी गैस. गैस टाक कॉन्ट्रैक्ट करिया कहले हम कोन करिया पड़िबो? पिस्टन को डाउनवर्ड मूवमेंट करिया पड़िबो. अच्छा, पिस्टन सपोज डाउनवर्ड मूवमेंट ही कोठी आसला. लेट दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ पिस्टन. सो केते डिस्प्लेसमेंट तळको आसला देखो, dx. बस. तो एई टाइम रे हम कहि जे गैस गोटे फ्लूइड. सो फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर. ता माने ए जो वॉल रे, पिस्टन रो वॉल रे फोर्स कोड पड़छ. This is the direction of force. Clear? Fluid आदत एटा, it exerts force perpendicular to the wall of the container, perpendicular to the surface बस मन रखो. सो जो येलो कलर आरो मार्क दिया गला सेटा कोन सब देखेला? येलो कलर आरो मार्क हम रिप्रेजेंट कला फोर्स ऑन द पिस्टन. फोर्स ऑन द पिस्टन. क्लियर? इजी अच्छी कॉन्सेप्ट. अब आडियाबेटिक वाल तुम कहली सब जिंती कहया कथा. अच्छा, तर लैंग्वेज कौन लिखिए? अच्छा, दिस इज आवर, दिस इज व्हाट, दिस इज योर मूवेबल, दिस इज योर मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन.
यस बस थियोरी एमती एक्सप्लेन करवा आम फ्रिक्शन तो केत जीरो हेनी ना सो फ्रिक्शन लेस सो इजिली वी कैन डिस्प्लेस द पिस्टन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन ओके बर्तमान कौन है तुम कह गैस बर्तमान कंट्राक्ट्स है सो आम लैंग्वेज लिखा व्हेन पिस्टन मूव्स when piston moves in downward direction through a small displacement dx then small displacement small work done will be occur so then small work done will be तो हेल्प केते हे सही सेम फॉर्मूला dw इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर ये मजा जिनस है फोर्स डायरेक्शन कोड कहली मु अपवर्ड थिला एंड डिस्प्लेसमेंट कोड है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो ना गैस सो एंगल बिटवीन देयर एंटी पैरेलल मींस थीटा इज 180 डिग्री सो यू पुट सो एफ dx cos 180 clear and cos 180 is minus 1 cos 180 minus 1 so we can write minus f dx बस so again पुणी से भी सेम फॉर्मेट यूज करो instead of f we can write p into a into dx now we can tell what is a into dx that is your dv okay that is your decrease in volume जोटा आसला माइनस dv आसना देखो टर्मटा कौन आसला माइनस dv माने वॉल्यूम डिक्रीज होइछि so minus v dv so this is the value of what dw तो आंसर कौन देख लो कह ये dw मीनिंग कौन आसला कह दिस इज dw मीन्स work is done on the system work is done on the system okay work is done on the system and this result कौन आसला हमरो pdv that is your negative so this answer is negative so you remember all of you remember work done on the system work done on the system is equal to negative okay always keep this thing in mind so dita jinस हम जानले when gas expands when gas contracts so जदि हम conclusion हिसाब लिखिबा कोन लिखिबा बर्तमान keep it in mind keep okay so we can write gas expands that means volume increases gas expands means volume increases and volume increases means work done कौन होची positive so positive work done again कौन देखले हमें gas contracts that means volume decreases okay volume decreases and volume decreases means your negative work done okay मैं love symbol दोज मैंने कौन love symbol means it establishes the relation between contraction of gas and volume decreases negative work done ये सब explain करছি okay so this is our conclusion yes I hope it is clear to all of you next you come to the numerical part first we have to think about indicator diagram yes so next we will discuss indicator diagram so आज क्लास में तीन टा जिंस डिस्कशन कले ओके दीटा जिंस बेसिकली थर्मोडायनामिक वर्क डन और इंडिकेटर डायग्राम ओके अब इंडिकेटर डायग्राम रिलेटेड तुम क्वेश्चन आसो सो इंडिकेटर डायग्राम में कौन पढ़ा सो रिमेंबर इंडिकेटर डायग्राम इज नथिंग इट इज द पीवी कर्व so it is the pressure versus volume curve okay that means P versus V curve okay बस so ये को axis रे को parameter नवा को so volume is taken along here pressure is along y axis pressure is taken along y axis and volume is taken along your x axis okay
बस. So you remember this thing. Then come to the graphical part. अरे बहुत इजी अच्छी देखो यार न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल लगे तुम मानू. So this is your graph P pressure along y axis and volume along x axis. Yes, and let this is the curve. Let this is the thermodynamic curve. Any thermodynamic curve. अच्छा ये जो इनिशियल वैल्यू रा कर्व रो इनिशियल पॉइंट केते वॉल्यूम शो करछि v1 and let this point corresponds to volume v2. Yes, मु कोन करिवे एठी एटा स्मॉल स्ट्रिप मु कंसीडर कली वेरी स्मॉल स्ट्रिप. देखो ए स्मॉल स्ट्रिप हम कोन रिप्रेजेंट करछि नाउ यू सी थिंक अबाउट दिस स्मॉल स्ट्रिप. ए स्मॉल स्ट्रिप को हम यदि ऑब्जर्व करिवा तो मु कोन देखाउ छी एटी एमती फील होउछि जेमति कि एटी प्रेशर गोटे कोन कांस्टेंट अछि. दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्रेशर p हैला. एक्चुअली एटी दीटा पॉइंट हमें पाउजे. दिस टू पॉइंट्स आर नाउ सी इट. दिस इज वन पॉइंट दिस इज अनदर पॉइंट. ए दीटा पॉइंट भितर कोन लिखा होउछि प्रेशर वेरी very very less, pressure difference is very very less. So nearly suppose p, these 2 points corresponds to pressure p. Let these 2 points are a, another point is b. Okay, and this point is c. Yes, another point is d. एति गेला बस. एठी हम कहबा c to d भितर वॉल्यूम डिफरेंस केते. let this volume difference is dv. So now you see let this volume difference is dv. सो मु पचारि बेटी थर्मोडायनामिक वर्क डन गोटे भल जिनस आम शिखिले प्रिवियस कनसेप्ट रु. थर्मोडायनामिक वर्क डन जो मेकानिकल वर्क डन आम यूज करुचे फॉर्मूला कौन. इन केस ऑफ मेकानिकल वर्क डन कैलकुलेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक वर्क डन यू हैव टू पुट प्रेशर इंटू वॉल्यूम. ओके dw इक्वल टू pdv पाइले आम. अच्छा ये pdv कौन देख तो जो मु स्ट्रिपटा तैयारी कली एठी छोट स्ट्रिपटा पतला स्ट्रिपटा वेरी नैरो स्ट्रिप. देखो एटा गोटे देखा कौन गोटे रेक्टांगल तार एरिया केते हबो p इंटू dv. दैट मीन्स हम कहि परिबा एठी वी कैन राइट थर्मोडायनामिक वर्क डन dw is equals to pdv and pdv is nothing, it is the area of abcd. Yes, so मुझे पचारि आम कौन पचारे वॉल्यूम v1 टू v2 वर्क डन केते हबो. सो दस टोटल वर्क डन फ्रॉम v1 टू v2 दस टोटल वर्क डन फ्रॉम v1 टू v2 केते हबो. सो w वॉल्यूम केते केते चेंज होईची वॉल्यूम d टू c चेंज होईची. वॉल्यूम तो dv आम चेंज नै जे कोन आम सिंपलीफाई करे पे आम dv चेंज नेले वॉल्यूम चेंज कोड होईची. वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2. So when volume changes from v1 to v2 in any thermodynamic process, so you calculate the total work done as per the graph. So total work done from v1 to v2 that will be kete hobo integration dw. Okay, integration pdv volume range v1 to v2 lower limit upper limit ये सब concept जानिछो. upper limit कोन lower limit कोन. Yes, so this is our एटा कोन कह जाय रे you remember the style of writing y dx integration x1 to x2. It represents what area under yx graph. बस similarly integration v1 to v2 integration ranging from v1 to v2 integration of pdv. Okay, limits point v1 to v2 तार एटा कोन शो करिवो. This represents area below PV diagram, P versus V diagram or PV curve. Yes, so W is equal to how much जाना पड़ले हमरो area below PV diagram. बस so भलो जिनस रे फील करो इन दिस ग्राफ जो एग्जांपल हम नै कि एक्सप्लेन करली ना एटा हला हमरो PDV मींस एरिया बिलो द कर्व. बस दिस रीजन एटी कोन होउजी रे देखो तो थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम चेंज होउची. ठीक कथा v1 टू v2 तो v1 टू v2 वॉल्यूम इंक्रीज होउची ना डिक्रीज होउची. v1 टू v2 वॉल्यूम इंक्रीज होउची. अरे एटा 0 थिला ए वैल्यू 0 टू v1 समथिंग अधिका हला देखो. बस सो v1 टू v2 कोन होउची वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. सो वी कैन से इन द ग्राफ थ्रू आउट द प्रोसेस
In the graph throughout the process volume is increasing. Throughout the process volume is increasing. So volume increasing माने कौन कही मु गैस एक्सपांड होउची. That means work done positive or negative? Work done is positive. ए दुटा लाइन को मन रखो ठीक से, अदरवाइज होल क्लास किसी बुझ परिबनी. So एटी कौन देखले मैं इन ग्राफ थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हिच इंप्लाइज वर्क डन इज पॉजिटिव. वर्क डन इज पॉजिटिव. क्लियर? यस. सो नेक्स्ट कम टू न्यूमेरिकल पार्ट. छोट छोट आम क्वेश्चन केतरा करियो, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन सी. क्वेश्चन देला तुमको से इंडिकेटर डायग्राम रो क्वेश्चन मु खाली आज करिछि. So this is our question. So this is your pressure in Newton per meter square unit and your volume in meter cube. Okay, बस पैरामीटर दे देली. तो क्वेश्चन केमती देला देखो एठी. तो एमती सब क्वेश्चन आसीबो, इजीली यू कैन सॉल्व. जो पिला भी लेक्चर टाको ठीक से सुनी थिबो, कॉपी मेंटेन करथिबो, आराम से करिवो सब. सो डायरेक्शन केमती देला तमरो, दिस इज द डायरेक्शन. जहाँ क्वेश्चन अच्छे मुझे कर सारे ए बी एंड सी एंड दिस बी corresponds to value 150, a corresponds to value 50 and this value is your 100 as per the question, and a point corresponds to volume 10 meter cube. Volume unit कौन देइछि 10 meter cube. C corresponds to 30 meter cube. This point corresponds to 20. So as per the question it is asking find out the work done. Find out the work done during the given cyclic process. Work done during the given cyclic process. Okay, this is our question. So किसी ना एवं कहली वर्क डन कैलकुलेट करार फॉर्मूला कौन कहली मु वर्क डन इक्वल टू एरिया बिलो पीवी डायग्राम. बस. तो तुम सिंपली कौन करिवो, फास्ट वर्क डन बाहर कला पर देन चेक करिया पड़ियो वर्क डन इज वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, अदरवाइज एति चेक न कले किसी फायदा नहीं, तुम 50% मार्क काटी दे परंदी. सो कम टू द आंसर पार्ट एंड W is how much? W is equals to area of a triangle ABC. Simply you calculate area of triangle ABC. So area of triangle कौन रे half into base into height. So half into base value केते देखो तो base रो range टा देखो. So base ranging from AC डाला base तो value केते हबो C रहला 30, A point रहला केते 10. So 30 minus 10 20. So unit कौन लिखिबा 20 meter cube. So base हला हमरो 20 meter cube. Okay, into height को पुणी जाबो AB केते हबो 150 minus 50. So डाला हमरो 100. यूनिट कौन रहला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो हम लिखिबा एटी 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ वी कैन सॉल्व. ताउ सॉल्व करले केते आसला सॉरी सॉल्व करे हमरा आसीबो 1000. ओके, तार यूनिट केते मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब. सो कट कला परे तमरा आसीबो न्यूटन इनटू मीटर. यस, आ न्यूटन इनटू मीटर कौन कह जाए जूल. किसी ना तुम वर्क डन बार कर ना वर्क यूनिट कौन ऐसा यूनिट जूल. सो 10 to the power 3 joule. This is the work done. Now we have to think whether this work done is positive or negative. Answer तो positive रे बाहर ला हमरो. now तो हमें चेक करिया केमती चेक करिया. now you listen it properly. तब केमती चेक करिया बहुत इजीली देखो. we have to check actually. Okay, so you see the diagram. yes. so देखो मु तीन टा हमें जो टोटल ग्राफ अच्छे हम रखना AB देन BC देन CA. अरे मु एमदी नेम कोन में कहली बिकॉज थर्मोडायनामिक प्रोसेस रो डायरेक्शन हम जानिबे कोनती एज पर द डायग्राम रे आरो मार्क कोन शो करछ A to B देन B to C देन C to A. so then you write during A to B देखिला वॉल्यूम कोन होची. अरे ए रे वॉल्यूम जति थिला बी पॉइंट रे वॉल्यूम सेम से 10 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट. सो ड्यूरिंग ए टू बी यू रिमेंबर ड्यूरिंग ए टू बी वॉल्यूम इज कांस्टेंट. अरे वॉल्यूम जदि कांस्टेंट हला
तो कौन हम वर्क डन के 0 वॉल्यूम चेंज हेल्ले तो वर्क डन हम पॉजिटिव कि नेगेटिव एक्सेट्रा सो व्हिच इंप्लाइज नो वर्क डन ओके नो वर्क डन फॉर्मूला मैं कौन कहली प्रेशर इंटू वॉल्यूम सो वॉल्यूम चेंज के प्रेशर इंटू पी डीवी सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी आ चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम तो चेंज है सो चेंज इन वॉल्यूम के 0 सो 0 इंटू प्रेशर 0 finished so no work done then you come to during B to C explain what is going on during B to C during B to C भल से देखो during B to C कौन हो B to B पॉइंट वॉल्यूम के 10 मीटर क्यूब C पॉइंट 30 so during B to C वॉल्यूम कौन है is increasing बस so during B to C वॉल्यूम हमारा इंक्रीज है वॉल्यूम इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस मीन्स आज पढ़े आम डब्ल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव बस ताने अच्छा यही पॉइंट रे बी टू सी कौन देखिए आम डब्ल्यू वैल्यू केमती पाइबा सो डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर बी सी ग्राफ कुआइज एरिया अंडर पी वी ग्राफ सो ड्यूरिंग बी टू सी प्रोसेस टाइम रे तुम कौन कर ड्यूरिंग बी टू सी वर्क डन आम केमती पाइबा एरिया अंडर बी सी ताने टोटाल एरिया नवा ओके ये टोटाल एरिया बस वॉल्यूम इंक्रीजेस मीन्स दिस वर्क इज पॉजिटिव ए टोटल एरिया में कंसीडर करवा एरिया अंडर बी सी सो डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर बी सी ग्राफ क्लियर एंड दिस इज पॉजिटिव यस बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग अगेन कम टू C2A बढ़िया जिनस देख C2A केस रे तुम कौन देख लो इन केस ऑफ C2A तो सी पॉइंट 30 मीटर क्यूब ए पॉइंट 10 मीटर क्यूब सो वॉल्यूम डिक्रीज है ये तो मैंने गैस कंट्राक्ट है सो डब्ल्यू कौन हम नेगेटिव से नेगेटिव वर्क डन किए रिप्रेजेंट कर कह एरिया अंडर एसी एरिया अंडर एसी ताले नेट वर्क डन केते हम बिगर माइनस स्मॉलर कर दो बस तो कौन आसला एरिया अंडर बीसी माइनस एरिया अंडर एसी करा मैंने तुम कौन बाहर पॉजिटिव बाहर ओबियसली कारण एरिया अंडर बीसी कौन थी टोटाल एरियाटा आमर थी बुझल ये टोटाल एरिया ये छोट एरियाटा माइनस करदेव एरिया अंडर एसी सो पॉजिटिव ओबियसली फाइनल रिजल्ट कौन आस पॉजिटिव सो बुझल आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो मैं कौन लिखले ड्यूरिंग बी टू सी डब्ल्यू रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर बीसी ग्राफ यस नेक्स्ट कम टू योर ड्यूरिंग C2A यस ड्यूरिंग C2A अरे आहरी न्यूमेरिकल करेबी ओके आहरी 2-3 क्वेश्चन कले आहरी क्लियर हो डोंट वरी सो ड्यूरिंग C2A वॉल्यूम कौन है को वॉल्यूम डिक्रीजेस मीन्स गैस कॉन्ट्रैक्ट्स गैस जदि कॉन्ट्रैक्ट्स है सो व्हिच इंप्लाइज वर्क डन नेगेटिव and is represented by and work done is negative which is represented by area under CA plus area under CA that means total work done कितने हो thus total work done is equals to area under BC minus area under AC yes so that is your final result कौन आसला positive so work done is positive so throughout this thermodynamic process total work done कौन आसला positive work done means work done by the system or on the system work is done by the system okay yes so next come to second question केमती जानिलो मैग्नीट्यूड केमती बाहर करिवो आ केमती वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेट करिवो सेकेंड क्वेश्चन कर मजा लगे आहरी भल लगे देख नेक्स्ट कम टू सेकेंड क्वेश्चन यस क्वेश्चन नंबर 2 सेमती देला तुम पीवी डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 पीवी डायग्राम इज गिवन लाइक दिस प्रेशर हाँ ये प्रेशर दे देला कौन इन एटीएम बस ये वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर यस बस देन दिस इज द graph and the direction is like this is the direction of thermodynamic process दे जहाँ देख वैल्यू केमती देला करेस्पोंडिंग वैल्यू भल लगे देख दिस इज सपोज द करेस्पोंडिंग वैल्यू लेट मी अलाउ टू ड्रॉ
Okay, so it is given 10, 20, 30 and it is mentioned 10, 20, 30. So pressure axis रे हमरो कोन 10 20 30 हमरो 10 atm 20 atm 30 atm इन सब गिवन अछि क्वेश्चन बुझ पाइलो सो क्वेश्चन पचरला एटी फाइंड आउट द वर्क डन किछि नै आराम रे करि परिबा सो वर्क डन फार्मूला यूज करो फटाफट हमें कर देबा सो वर्क डन इज सो 10 आंसर हम कोन करिबा आंसर एरिया इज वर्क डन w इज इक्वल टू एरिया सो एरिया is work done. So what is its value? So W is equal to circle देखला pi r square. Yes. So pi r केते हबो कहले देखिया pi r square को r वैल्यू केते लिखिबा अरे एरिया मींस सेठी यूनिट कोन रहबा देखिया पड़ियो भी होला तो चेक करो देखो एडी पिला भूल कर देबे एटा बे परिबो तुमरो r वैल्यू केते 30 minus 20 10 otherwise you may think about this line 20 minus 10 10 or you may think about this one 30 minus 20 10 सब एका बाहरिबो so हमर पाई वैल्यू केते 3.14 into r square अछि हला तले कोन हबो 10 square r वैल्यू 10 बट यूनिट कोन रहबो एठी atm pv कहथिल ना एरिया अंडर pv so pressure axis रा यूनिट into वॉल्यूम axis रा यूनिट so atm into liter then तक हम कोन करिया पड़ियो कन्वर्ट करिया पड़ियो SI यूनिट रे so 3.14 into 10 square yes into what is the value of 1 atmospheric pressure so तो पाठ मन नहीं atmospheric pressure 1 atm is equals to 1.01 into 10 to the power 5 newton per meter square that means pascal yes so no need to write the unit and the convert कर देले SI रे बस into again आसला 1 liter को हम कोन लिखिबा 10 to the power -3 meter cube okay 10 to the power -3 meter cube ए बुझिया पे लिखि दउची and एटा newton per meter square yes so if you will solve this will become केते आसला 3.14 into 10 to the power 2 into 1.01 into 10 to the power 5 10 to the power -3 that is 10 to the power 2 yes all are in SI units so it will become 3.14 into 1.01 value आसी तमर कैलकुलेट कला परे 3.17 into 10 to the power 4 joule because हम SI unit रे कन्वर्ट करले so next हमर डाउट हम कोन देखिया पड़ियो check whether the work done is positive or negative so एटा हम पे हला क्वेश्चन so क्वेश्चन हला के check whether this work done is positive or negative this work done is positive or negative तब केम चेक करिया बर्तन देखो ओके स्मॉल में नवा अगेन ताको डायग्राम टाको रिड्रा करिया पड़िबो हमको हम सीधा डायग्राम स्मॉल आर्गुमेंट रे हम कहि दे परिबा कोन whether the work done is positive or negative ओके किछि प्रॉब्लम नहीं see this okay so as for the figure प्रोसेस केमती होउछ देखो सपोज मु ए पार्ट टाको नै गली एटा रेफरेंस लाइन टा मु ड्रा करली देखो केमती आर्गुमेंट करके हमें सब सॉल्व करिवा थिंक अबाउट दिस रेफरेंस लाइन सो ए पॉइंट नली मु ए पॉइंट देन याको हम इरेज कर देबा सुविधा हबो डॉटेड लाइन को मैं इरेज कर देबा एक्सप्लेन करिया पे सुविधा हबो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बॉल से बुझ पारिबो होला सीट yes so as per question एति था yes so मो जो रेफरेंस लाइन ड्रा करली एमती करियार मीनिंग कोन भी एटा तुम जानि परनो बर्तमान देखो सॉरी so this is a point let this point is b let this point is c and this point is d so हमें कहि परिबा देखो a to c from a to c
ना से डायग्राम देखिबा ठीक से आंसर दबो कॉपी पेन यूज करके क्लास करो सो फ्रॉम ए टू सी कौन हो देख डायरेक्शन अच्छी ना ए टू सी डायरेक्शन जमी नेली बर्तमान मुझे ए टू सी वॉल्यूम कौन है ए रे करेस्पोंडिंग वॉल्यूम देख और सी रे करेस्पोंडिंग वॉल्यूम वॉल्यूम ऑब्वियसली इंक्रीज होउछि ना 10 to 30 लीटर 10 लीटर थी देन 30 लीटर हो गला सो ए टू सी रे कौन है वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीजेस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग मीन्स gas expands and gas expands means which implies W is equal to positive अब ये पॉजिटिव वार्डनटा किए रिप्रेजेंट करियो रिप्रेजेंटेड बाय मु कहि परिबी एक कलरटा हम यूज करबा येलो कलर सीट शेडेड पोर्शन एरिया अंडर ए टू सी ग्राफ देखो येलो कलर पार्ट हे गला सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरिया represented by yellow color shaded region okay yellow color shaded part or yellow color shaded portion okay yes then you think about C to A again you think about C to A so from C to A C point कौन थी रे वॉल्यूम 30 लीटर ए पॉइंट रे पहुंची गला परे एज पर द डायरेक्शन केते 10 लीटर सो फ्रॉम सी टू ए वॉल्यूम कौन होजी वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग अगेन वॉल्यूम डिक्रीजिंग मीन्स गैस कौन होला गैस व्हिच इंप्लाइज गैस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गैस कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स व्हिच इंप्लाइज डब्ल्यू इज नेगेटिव अच्छा यही नेगेटिव वार्डनटा केमते हो एरिया अंडर सी टू ए सो से एरिया अंडर सी टू टा केते हो देखो एरिया अंडर सी टू ए सो एथरो होल एरिया देखिछ सो एरिया अंडर सी टू एटा हला तमर कोन नेगेटिव ए टोटल क्लियर दिस इज एरिया अंडर सी टू ए सो टोटल वार्डन केते हो ताले एरिया अंडर सी डी ए माइनस एरिया अंडर ए बी सी एतिक हमर टोटल वार्डन हमर थर्मोडायनामिक प्रोसेस टा केते देछि कि ए साइकिल टा हमर कोन सर्कल टा देला दैट इज योर थर्मोडायनामिक ग्राफ ओके पीवी इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम सो सेतिक एरिया केमति पाइबो ए टोटल टारू माइनस करिवो सो एरिया अंडर सी डी ए माइनस एरिया अंडर ए बी सी ऑब्वियसली सो वार्डन इज नेगेटिव हम कहि परिया कोन रिप्रेजेंटेड बाय तो कलर देखे देली एबे क्लियर होला सो टोटल वार्डन नाउ वी कैन राइट thus total वार्डन इज equals to area under CDA minus area under ABC ओके एबे को एरिया अंडर CDA टा लार्ज एरिया ना तो कौन अच्छी आंसर नेगेटिव सो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव केते आसीबो नेगेटिव बस अरे नेगेटिव माइनस पॉजिटिव सदाबे नेगेटिव आसीबो बोली दिस माने नहीं हैला तुम कहबी नेगेटिव माइनस पॉजिटिव तो कौन है ऑब्वियसली नेगेटिव माइनस पॉजिटिव है मैंने हमर नेगेटिव आंसर आसला कारण एरिया अंडर सीडीए कौन कहली तुमको एरिया अंडर सीडीए टा गोटे लार्ज एरिया ये टोटल एरिया टा कहला सो माइनस करबा हमें का को माइनस करबा एरिया अंडर एबीसी को ऑब्वियसली तुम आंसर कौन आसबो नेगेटिव सो नेगेटिव वार्डन मीन्स थर्मोडायनामिक प्रोसेस टा कौन है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो माने गैस कौन हो जेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हो क्लियर सो नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन करबा देखो क्वेश्चन नंबर 3 शायद नाउ सी दिस क्वेश्चन यस एथरे भी सेमती तुमको इंडिकेटर डायग्राम गिवन दैथिबो ये सब इंडिकेटर डायग्राम रो क्वेश्चन आई होप मजा लागु तुम मानकु देखो पढ़िबार इच्छा थियो तुम माने शिखिबार इच्छा थिले चुपचाप है कि शिखिबो ओके देखो सो दिस पॉइंट इज गिवन ए दिस इज बी दिस इज सी एठी प्रोसेस केम जाउची ए टू बी देन बी टू सी देन सी टू A. So question is find out the work done. अच्छा वैल्यू corresponding वैल्यू गिवन नहीं वर्तमान now see a रो अच्छा वॉल्यूम एटी देजी in cubic centimeter in cc and pressure को यूनिट रसी pressure in dyne per centimeter square in
डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने CGS अच्छे प्रेशर सो ए पॉइंट करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वैल्यू है 50 बी पॉइंट करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है 150 ए पॉइंट है 100 cc सी पॉइंट करस्पॉन्डिंग प्रेशर सी पॉइंट करस्पॉन्डिंग प्रेशर 30 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ए पॉइंट रे 10 and this point belongs to 20 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यस सो सिंपली हम कौन करिया पड़िबो वर्क डन बाहर करिया टोटल एरिया बाहर करिबो कोन एरिया ऑफ द ट्रायंगल होबो एति सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC करा सरचे बे प्रीवियसली ट्रायंगल क्वेश्चन गुडे करली मु बट राइटिंग स्टाइल यू हैव टू फॉलो सो एरिया अंडर ट्रायंगल सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज योर वर्क डन सो answer W is equals to area of triangle ABC that means half into base into height बस base value केते हो AB is your base केते हो B point रो value है 150 A है 50 so 150 minus 50 100 centimeter cube so half into 100 centimeter cube okay cc means what cubic centimeter cube into h value h means your BC c rela 30 minus 10 that is 9 per centimeter square so that is 20 30 minus 10 is 20 so 20 9 per centimeter square ये cancel हो देखो centimeter square centimeter cube cancel करो रहला centimeter so final answer is your 2 cancel होला 10 so 1000 डाइन इंटू सेंटीमीटर एंड डाइन इंटू सेंटीमीटर को आम कौन कह दैट इज योर अर्ग सो 10 to the power 3 अर्ग yes this is our work done so what we have to check again here what we have to check whether this work done is positive or negative okay so again you focus upon the diagram part focus upon this diagram part only you have to judge whether the work done is positive or negative yes this is the diagram now tell thermodynamic process direction को A to B then B to C then C to A देखिए पड़ियो so during A to B रे कौन लगो वॉल्यूम increases अरे वॉल्यूम इंक्रीज है A to B 50 to 150 cc volume increase means W is positive W is equal to positive W is positive means area below AB direct हम लिखिबा area below AB then you think about during B to C कौन देखला volume equal to constant volume constant means no work done which implies change in volume के 0 so no work done किछि work done एटी हला नहीं then during C to A then come to during C to A कौन है C रेला 150 cc A रे 50 cc वॉल्यूम डिक्रीज हला so volume decreases means gas contracts gas यदि contracts हला which implies W कौन हला नेगेटिव हे वर्क डन कौन दिया सिबरे एरिया अंडर CA so area W negative and this is represented by area under CA हम ये ट्रायंगल एरिया केमती पाइबा ये ट्रायंगल एरिया पाइबा केमती एरिया अंडर CA माइनस ट्रायंगल एरिया केमती मिलिबो देखो एरिया अंडर CA फर्स्ट थिंग इज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ट्रायंगल एरिया सो एरिया अंडर CA माइनस एरिया अंडर केते माइनस एरिया अंडर AB बस एरिया अंडर CA माइनस एरिया अंडर AB obviously so net work done kete so W total is equals to area under CA minus area under AB plus C to A to B that means कौन होगा नेगेटिव कारण एरिया अंडर CA टा तमर कौन आसिला नेगेटिव वैल्यू ना एरिया अंडर AB कौन आसिला पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीज होतला बोली सो नेट वर्क डन इज नेगेटिव net work done is negative means work is done
on the system. Okay, bas. So only you write work done is negative. Okay, I hope it is clear to all of you. So this is all about for today's class. So thank you, have a nice day. Clear? So ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ସବୁ ତକ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ and indicator diagram. Okay, okay, thank you.